और इनका जो ऑब्जर्विंग पावर है और जिस तरह से स्पॉट करके मुझे दिखाया गया है वो बिल्कुल अमेजिंग है। और ये इनके द्वारा जो बैम्बू वाटर बॉटल्स किया हुआ है वो बहुत ही एक इनोवेटिव तरीका है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। इनको श्रेय पूरा जाता है, ये सब बधाई के पात्र हैं। हम लोग उत्तराखंड से आए हैं, देहरादून से, और ये हमारे लिए एक खूबसूरत पल हम यहाँ से जो लेकर के जा रहे हैं, ये इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ चंदन जी का। थैंक यू सो मच। Korea. Many. अच्छा ये क्या था? What was that word called? Can I try? Can I try? Can I try? Thank you. Handเลยครับ Done, Audrey. Well done. Clap. Shot down. Yeah. To with Kaziranga National Park with Mr. Chandanji. And I must say that it was absolutely spectacular. The scenery that we got to see, the animals that we got to see and take photos of was absolutely amazing. Mr. Chandan himself is an extremely informative guy. His driving skills are exactly on point and his spotting skills are way above anything else that I've ever seen. And he's also carved up this bottle here. It's actually made out of bamboo and it's got a very cool little plug here. And this is how you would actually drink it. Yeah. So it's actually empty at this point in time, but you sort of get the idea. But it's an extremely cool little thing. His reasoning behind this bottle is that you're not actually allowed plastic in the national parks. So he's come up with this idea.
So he's basically just come up with the bamboo, sealed it up at the bottom, and funneled it through here and drilled a hole there, and he's got a tiny little plug there. Extremely clever, very easy, and the water tastes really nice out of it. So thank you so much for everything that you've done for us today, and especially for this bottle here, because I will be taking this back to Australia. Thank you. Everyone, here we are at Kaziranga. We really had a great time. We saw many migratory birds, and Chandan has really got an bird's view, eagle's eye, I must say, because he could spot the tiniest bird and smallest animal. We saw many tortoises, many migratory birds like heron, kingfisher, short ducks. There were so many names which I don't remember, but all of them were just fantastic, and we really had a marvelous time. Not only that, the landscape which he showed was so beautiful. There were wetlands and tall grasses, and then he also pointed out a tree which is known as Bishop's tree, where the tigers, after hunting, they come and clean their claws on the wooden, and we could see the marks on the wood. It was so from such a close view, it was so amazing. The deers and all, several deers which we saw, hog deers, buffaloes, and very close look we had of rhinoceros. And not only these birds, but the whole landscape was so beautiful. We had such amazing time. I just can't express in words how much we are grateful to Chandan ji for taking us and giving us 100% and giving us a great ride. Thank you so much, Chandan. Thank you, really. I admire your spirit, and God bless you. জানানে আমি চন্দন দাদাৰ লগতে আমি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কতে গৈছিলোঁ। চাফাৰী কেইটা আমি বহুত জন্তু চাইছিলোঁ, আৰু এই জন্তুটো ইমান ধুনীয়া আছিল। আৰু তাৰপিছতে আমি বহুত জন্তু দেখিছিলোঁ। তাৰপিছতে এই পিকচাৰ্ছ আৰু বাইনাকুলাৰ্ছ লৈ পিনে আমি ভালকৈ দেখিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত ধন্যবাদ চন্দন দাদা। আৰু এইটো কাৰণে সি চব বস্তু কথা পাতিছিলে, আৰু কি কয় এই জন্তুৰ মাজতে। আৰু তাৰপিছতে আজি এইটো দিনটো বিৰাট ধুনীয়া আছিল, আৰু চন্দন দাদাৰ লগতে। আৰু তাৰপিছত তাৰ ড্ৰাইভিং স্কিলছটো মজা। हाँ, धन्यवाद। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, और मेरे लिए ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मुझे काजीरंगा सफारी पार्क चंदन जी के द्वारा करवाया गया। और इनका जो ऑब्जर्विंग पावर है और जिस तरह से स्पॉट करके मुझे दिखाया गया है वो बिल्कुल अमेजिंग है। और ये इनके द्वारा जो बैम्बू वाटर बॉटल्स किया हुआ है वो बहुत ही एक इनोवेटिव तरीका है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। इनको श्रेय पूरा जाता है, ये सब बधाई के पात्र हैं। हम लोग उत्तराखंड से आए हैं, देहरादून से, और ये हमारे लिए एक खूबसूरत पल हम यहाँ से जो लेकर के जा रहे हैं, ये इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ चंदन जी का। थैंक यू सो मच।